Hi everyone, now in this new video we'll talk about the selection process of one of the best amazing campus of India, which is FMS Delhi, which is mostly renowned for the marketing program. But if I talk about the placements of 2020 batch, the average placement size of 2020 batch who got placed was placed on around 25.6 lakhs, whereas the highest domestic package which was offered on FMS Delhi campus was above 56 lakhs. So that makes one of the dream college, which is FMS Delhi for all the MBA aspirants. But in this video, we'll talk about the selection process in detail. कि college आपको call देने से पहले, which is the round one call of interview and the final call selections के basis किस basis पे आपको judge करेगा. But before we even take that, you need to understand the total number of batch size which you have got for FMS Delhi. If you look into this, there are 251 seats which are total in FMS Delhi. Out of this, General will have 101 seats, SC will have 37, ST will have 19. Similarly, OBC and EWS will have 69 and 25 seats respectively. Okay, so maximum seats अगर आप जनरल की बात देखेंगे तो सीधा OBC के पास जाती है, जो आप देखेंगे यहाँ पे. Okay. However, for PWD candidates, there are 12 seats which have been reserved for children who are whose parents are serving for armed forces. There are 12 seats which are reserved, and for foreign nationals, that is NRIs, you will see 12 seats which have been reserved for the overall FMS intake. Okay. Now round one selection. Round one selection का मतलब ये होता है कि आपको इंटरव्यू से कॉल दी जाएगी, which is GDNPI की कॉल दी जाएगी. हाँ, अगर ये मुझे देखना है कि कौन कौन से बेसिस पे कॉल दी जाएगी, तो बहुत सिंपल सा है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका कैट का परफॉर्मेंस देखा जाएगा. ओके, सो जो लोग अभी आने वाले साल में देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग 2020 में देंगे, इट्स गोना बी 2020. लाइकवाइज ये सिनेरियो आगे चलता जाएगा. ओके, सो सिर्फ और सिर्फ आपके कैट के बेसिस पे, व्हिच इज 100% वेटेज ओनली ऑन योर कैट परफॉर्मेंस, द कॉलेज डिसाइड्स टू गिव यू अ कॉल फॉर द इंटरव्यू और नो. ओके, इफ आई लुक इनटू दिस, टेक्निकली आपके BARC, आपका लॉजिकल रीजनिंग और आपके क्वांट के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा. The weightage is highest for verbal, which is 40%. Highest then goes for quant, which is 30%, and same is for logical reasoning and data interpretation, which is 30%. Sum total, 100% weightage is given only and only to your CAT performance. Okay, only and only on your basis of CAT performance. हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ in terms of percentile, तो जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप ये समझ लो कि 99% प्लस ही आपका कट ऑफ जाएगा FMS दिल्ली के लिए. इन टर्म्स ऑफ रॉ स्कोर अगर मैं बात करूं, तो आप ये पकड़िए कि 150 के ऊपर आपको स्कोर लाना पड़ेगा कैट एग्जाम में विद ओवरऑल 85% प्लस एक्यूरेसी. ओके, अगर आप इस डायनामिक्स में आते हैं, सो आप श्योरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल फ्रॉम FMS दिल्ली. दिस इज राउंड वन सिलेक्शन. मतलब अगर आपका इतना आ गया तो आपको कॉल तो आ ही जाएगी. इसके बाद ये मतलब नहीं कि सीधा आपको एडमिशन कॉल दिया जाएगा. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर okay, now it's important for you to look into the aspect of the overall selection process कि आपको एडमिशन के टाइम क्या देखा जाएगा. आपके फाइनल GDPI के बाद आप ये समझिए कि 60% वेटेज अब जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का था वो जाता है कैट स्कोर को, और 40% आपके प्रोफाइल को जाता है. आप प्रोफाइल में देखिए, पहली बात आता क्या है. प्रोफाइल में जाने से पहले पहली बात आपके GD&PI का स्कोर देख लो आप. सो 15% will be given to your GD and 15% will be given to your PI, which means 30% आपका तो यही निकल जाएगा, which is GD and PI. तो सिर्फ और सिर्फ as simple as सिर्फ और सिर्फ सबसे कम 10% आपका जो वेटेज है वो क्लास 10th और 12th के स्कोर को दिया जाएगा. ग्रेजुएशन स्कोर एंड डाइवर्सिटी विल नॉट इवन बी कंसिडर्ड. आप इंजीनियर हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इट इज ऑल सेम. सो 5% वेटेज फॉर 10th एंड 5% वेटेज फॉर 12th. एक बात और गौर कीजिएगा, ऑल पीपल हु आर राइटिंग द कैट 2020 एग्जामिनेशन, 3% more weightage will be given for women candidates who are appearing for the CAT examination. Okay, so overall selection में 3 pointers आपको और मिलते हैं if you are a female and if you are writing the CAT exam and applying for FMS Delhi. Okay, why so कुछ colleges हैं, B.Ed, MBI, गुड़गांव, FMS Delhi, SB Jain. ये तीन तो आपके ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस कैट एग्जाम से पहले खत्म हो जाता है. ओनली इफ यू आर वेरी डैम श्योर कि आप इतना परसेंटाइल निकाल सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है, आपका प्रोफाइल उतना अच्छा है, तो ही लोग इन कॉलेजेस का फॉर्म भरते हैं. क्लियर? सो आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. I wish you all the very best.
for the CAT upcoming CAT 2020 examination. Please do hit the bell icon. If you like the video, please share with your friends also, and please subscribe to the given channel so that we can give you more updates about the MBA selection criteria and the guidance for MBA exams.